Hello, hello guys. Hello everyone. Let other people join, then I'm gonna just start this live. Hi Sahil. Guys, I've organized this live event just to interact with the people who are wanting to get into the industry, and along with that, if they want to know something about UI and UX, I'm gonna help them out. Hi Akash. Good evening, Radhika. Good evening. Hello guys. Guys, the motive of this event just to like if you have any question regarding UI and UX, so we can discuss today as the we are ending up with the year today. So why not have answer to the doubts that you have about UI and UX? We can discuss that. So any of you have any doubt, any question, you can just throw that out in chat. I'm gonna answer that. Just four people have joined here. Let's wait for a while. Let's see if some other people joins. यूआई यूएक्स में करियर कैसे रहेगा प्लीज बताना in comparison to front end development. See, brother, like to like make your career into UI UX, I feel that you need sort of like problem solving skills and a lot of empathy towards human beings. Whereas in front end, it's all about technical skills, because when it comes to UI UX, you need a lot of empathy or a lot of things beyond technical stuff. And whereas in front end development, it's all about technical stuff, how well you understand the logic. And even like I'm not a front end developer at all, but yeah, I do understand a little bit of front end. But I'm going to tell you more about UI and UX. UI UX is very interesting career nowadays. A lot of new people are coming into the industry and they are doing really good. So that's why I feel like it's one of the good career to start with. And another advantage we have nowadays is that like very few people understand about UI and UX. So you're gonna have the first mover advantage here in UI UX as compared to front end. In front end, it's like every second guy knows about front end coding, like HTML, CSS, and they just stuck on JavaScript or any other library of JavaScript, right? But so that is what I think. Like if it comes to select between UI UX and front end, I'll go for my interest, whichever I like most. Hi Raj, good evening. अब्रॉड यार देखो सी बहुत ही लाइक अभी इंडिया में इतनी मैच्योर नहीं है डिजाइन इंडस्ट्री बट as compared to like if you want to compare India to other Western countries, then there are a lot of opportunity into design space. So market is really good in abroad.
And I don't know about the scope and how people are making career there, but however, there's that's what I feel like as compared to India. In India, design industry is not that mature. Very few influencers we have in design industry, but abroad we have a lot of people who are doing really good. So you might gonna have really good, scope there. Sahil, I wanted to be a web designer and I have completed two projects, not real site development. Uh, so yeah, see, I'm not a web designer, but however, if you want to get into any front end career or any designing career, it's a proof of work industry where you need to have a really good proof of work, and yeah, and that proof of work will gonna help you out to get some really cool companies or some really good companies. So you should have a very strong portfolio if you want to get into any design field. When it comes to web designing, I do have very little context towards it, whereas I've been more of a product designer, especially into SaaS. But however, in web designing also, it's also very much similar. You need to have a really good case studies, and like really good projects. And if you're gonna ask me, like if I'll be hiring any designer, at least there should be like enough or diverse work in your portfolio, so that I can understand that you have a understanding of diverse industries or fields. सर फिग्मा यूज करना चाहिए या कोई और टूल? Radhika, it's not you use any tool. Majorly it depends on like the kind of company you're working with and what sort of requirement they have, what sort of environment they're working in. But however, in most of the companies and small and medium companies, they don't they don't emphasize on tools. They are emphasizing more on problem solvings and that designs that you create out of it. So design, I mean, the tool doesn't matter that much. I know, sir, it's a good question, but still, I want to ask you, sir, that what about salary in UI UX as a fresher and internship? Yeah, to be very honest with you, in UI UX, salary starts with in internship it start with 10-15 thousand per month if you're working as an intern with any of the company, and on an average package goes somewhere from like 6 LPA to 10-15 LPA. However, it's more depend on the company that you are working with and the product that you are designing. But however, it when it comes to service based companies, they pay somewhere like five, like between 5-6, whereas product companies start little higher than that. So that's why I said like it start with 6.5 LP in product based companies. That's not a benchmark. It's majorly depend on the company, but that's what you can expect when you're going for a fresher, uh, going for a as a fresher in product designing. Any other question, guys? Really good questions, guys. Sir, where to find projects so that I can make case studies and it is in my portfolio as I am a beginner. If you want to find like projects, there's a website called UX Challenges. So you can like use that website, and there's another website called Fake Clients that help you out to generate fake design brief. You can work on that. All right. Except that you can pick any sort of problem around yourself and you can start working on that problem as well. That also adds value somewhere. तो सर कंपनी मैटर करती है और एक्सपीरियंस आपके अकॉर्डिंग? यार, अकॉर्डिंग टू मी, experience always has an advantage over the name of company that you have in your portfolio. However, if you're working with a very good product based company like Google, Amazon, Zomato, Swiggy in India, Netflix, Amazon, these companies really matters whether you have very little experience. For example, if you're 1-2 years of experience in a product based company that has a really good name into the industry, and whereas another person has the 2-3 years, you can surpass them when it comes to get shortlisted for resume. So somewhere good company, there's no binary answer to this, and somewhere the experience. Sir, currently I'm just 20. I mean, I'm just 18-year old. I'm studying B computer science. Got a free seat in college, but now I realize that there is much competition in this field. True.
In engineering itself, even I have been engineer, and so there's a lot of competition in engineering nowadays, because every second guy girl is doing engineering. Even every second person that you talk to, they might have done something into programming, in computer science, right? So yeah, there's a lot of competition. However, in UI UX, as compared to software engineering, it is not there, because the design industry is not that mature, as I earlier said it. So yeah, we do not have that much competition here in design nowadays. Can I add it to my portfolio? Yes, Prasanjeet. Take fake clients, complete their brief. I mean, design the product from the scratch and add that into your portfolio. That will always gonna add a lot of value, because on fake client website itself, you're gonna get the real brief. Uh, it's just you that you are not working for the actual client. You do not have the proper ownership. However, it would be a mock-up project, but the kind of brief you're gonna get from there, that will gonna add a lot of value to your portfolio. However, I am also thinking about running 100 days, 100 project streak on this channel, where I'll be creating one project, like at least three projects in a week, and one project by by every alternative day. So that I'm thinking of starting a live session on this channel itself. So you can be stay tuned here. So Mohammed Sahil, what should I focus on? You should focus on getting good knowledge about the field and implementing that knowledge to the actual project. How can we gather and incorporate user feedback? There are a lot of ways to get the user feedback. One of them is called like primary research. Primarily, you can talk to the users if you have access to them. If in case you do not have access to uh, users, in that case you can get it from the departments, though connect with the users directly. For example, if you have customer care departments who are continuously talking to the users, right? So you can reach out to the customer cares and our customer support team, because these are the people who are directly in touch with the customers for a lot of problems, right? So they're gonna give you a sense of like what customer is saying about the new feature or about your product, and then you can improve on that as well. Because when it comes to primary research or getting primary feedback or primary feedback from the users, it becomes really a daunting task, as you are having a lot of constraint like budget, timing, and some other things also. So better way is just to collect data from the internal departments and then analyze the data. सर फिग्मा के अपार्ट एज ए फ्रेशर और क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए इन जीयूआई यूएक्स डिजाइनर्स के लिए? यार, अपार्ट फ्रॉम फिग्मा, आई फील दैट you should know very good problem solving skills. I mean, you should have really good problem solving skills. You should know how to approach a problem and how to start from the idea to designing a solution for a problem, right? Apart from this, I one skill that I'll always gonna champion, whenever you're gonna ask me, that one skill that will gonna leave the very good remark in your career, that is called storytelling. How well how well you tell a story. So that always makes a difference. So storytelling is one of the critical skills that I'll always gonna champion for. Sir, I'm new. I want to experience in some projects. So how to get internship as a beginner? I don't even need any stipend. Just wanted to experience. Great, Prashanjit. It's not about getting a stipend. To even get the internship, you should have at least 2, 3 case studies in your resume to showcase that you have enough proof of work in your resume, enough proof of work in your portfolio, and then you can easily get the internship on Internshala, Wellfound, LinkedIn. These are the three platforms that I really like to get internship. And on these platforms, you can easily get the product based companies as well. They're gonna pay you really good stipend as well. Like stipend can start from 15, 20,000, but I think that when you are doing internship, which is good, and if you're joining really good company as an intern, they're gonna pay you 30, 40, 50,000 as well. Yeah, that's the approach. Go over these, like first create at least two projects, start from the scratch, implement your skills, implement your knowledge, whatever you have learned about UI UX, and present it to the people. I mean, present it to the employers where you want to do the internship. It's a very simple, like it's a pure problem solving skills. You can learn them by repetitively doing the same thing. Very simple. So yeah, create project and start applying.
Hi Samir. Hi Anmol. Anmol Sharma just mentioned a lot of time. Thank you, brother. I really appreciate it. Mohammed sir, want a video on freelance, how to find work, best freelance sites, what to ask clients for these project information, etc. Please provide. Sahil, definitely. I'm just think of creating a complete video on freelancing, and I've seen a lot of people are just doing bullshit, and they are just saying like anything for saying it. They are not telling you the truth or the actual truth about freelancing industry. A lot of people treat freelancing as a job or as a hobby, whereas freelancing is a complete business. It's your individual business where you are the owner, where you are the server, where you are the employee. So you have to treat freelancing as a business, then you're gonna shine in freelancing business. So I'm gonna make a complete video or complete roadmap on that as well. Stay tuned for that video that I have in my content pipeline. No worries. Sir, I'm confused about for now what topic should I choose for making my case study. I'm beginner and pursuing Google UX design course. Guys, I'm not in favor of like learning. To be very honest, I'm not at all in favor of learning complete UI UX from online sources. To be very honest, I'm a big fan of self learning. I always gonna champion self learning because I'm also self taught designer. But however, to learn even very small things, it took me 1 2 years, right? Whereas the same thing I can learn within a day or two in very structured course. So go for a live training courses. Even will be starting very soon. So I'll always gonna champion for the live courses, brother. And these, like, think of these recorded courses, YouTube or any other platform you can just use to advance or complement your skills. But just to understand the basic fundamentals of UI UX designing, you'll have to just join any structured course. Along with that, think about UI UX designing as flying a plane. If I'm going to teach you how to fly a plane from here itself, I can assure you won't be able to fly a plane at all, because it's very experimental learning. You'll have to first and solve the problems, and you'll have to learn it from there. So hopefully you got the answer to it. So, and when it comes to select the case study, find a problem around yourself that can be solved using design, that can be solved using digital product, and then create a case study on that. Along with that, another thing you can do, see the existing product that you do use on daily basis, find problem in that. To find the problem, we have a framework given by Jacob Nelson called heuristic evaluation. So using heuristic evaluation, you can conduct a complete UI UX audit on a product. You can find bugs in that product and you can redesign the experience. That is another way to do the case study. So what are some of the biggest trends in UX industry right now? Yeah, right now what I am seeing, the biggest trend, the people who are really growing in their career, they know one thing, which is called storytelling. Another, or sub part of that, facilitation. They know how to facilitate things actually. For example, when it comes to do any sort of activity, any sort of research activity within the company or outside of the company, you'll have to work as a facilitator. You have to educate others. So that is the skill that I always gonna champion for. Storytelling is a key, brother. If you want to shine in this industry, storytelling, because that's how you sell your ideas to your stakeholders. And you're gonna see a lot of times that you have very good solution, but you are not able to sell it out to the stakeholders because of you're not able to express it enough, or you are not able to line up bridge between the user needs and business objectives. So that's what I feel. सही यूआई यूएक्स का फील्ड का क्रेज अभी जाएगा तो नहीं, क्योंकि इसका बूम ब्रूम आया है, बस यही। क्योंकि सर आपका तो एक्सपीरियंस तो आप अच्छे से बता सकते हो। यार देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो किसी भी करियर का या फिर किसी भी अपॉर्चुनिटी का एक समय पर जब बूम होता है ना, तो फ्लक्चुएट भी होता है। ये तो सर्टेन है ही नहीं कि इसका मतलब लाइक इसका जो अभी इतना बूम हो रहा है अभी यूआई यूएक्स, एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट इट, ये नहीं जाएगा, जाएगा। बट सी, देखो, जैसे पहले जब व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग इंजीनियरिंग, इंजीनियर्स का बहुत था, लाइक एवरीबॉडी वाज वांटिंग टू गेट इनटू इंजीनियरिंग. It was a boom, like it was a, like when I started doing it, the lot of people are giving a lot of respect to engineers.
and engineers were like well respected into the society as well. But since like when I see it now, every second guy, every third guy is doing engineering, my friend. So that's how it works. जैसे ट्रेंड आया है ट्रेंड जाएगा भी, बट यू हैव टू लर्न इट क्विकली. अभी ऐसा नहीं है कि 2-3 साल तो नहीं जाएगा मेरे दोस्त. 2-3 साल तो डिजाइन इंडस्ट्री भी ग्रो हो रही है इंडिया में, तो आपके पास काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं. यू डोंट नीड टू वरी अबाउट. अभी आपके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज रहेगा. अगर इसके बाद जो ज्वाइन करेंगे तो थोड़ा लाइक कंपटीशन ज्यादा हो जाएगा. देखो डिजाइन तो इरिप्लेसेबल स्किल है. पीपल विल गोना स्टार्ट वैल्यूइंग द डिजाइन, और अभी डिजाइन विल गोना गेट अ सीट ऑन द बोर्ड एज वेल. ठीक है, तो क्रेज नहीं जाएगा, बट यू हैव टू लर्न कि जैसे हर एक करियर का एक फ्लक्चुएशन पॉइंट होता है, वैसे यूआई यूएक्स का भी होगा कभी ना कभी तो यार. वेरी मच श्योर. सर आई हैव अनदर क्वेश्चन. आई नो फिग्मा, प्रोटोटाइपिंग, यूएक्स साइकोलॉजी, मटेरियल डिजाइन 3. व्हाट टॉपिक शुड आई अप्रोच, uh, or should I now focus on projects? Guys, or Prashanjit, it's just not for you, it's for everyone who are learning, like who all are learning about UI and UX. See, if you want to really enhance your skills, or really want to master in anything, whatever you learn, implement that into real product, real project, real scenario, or on real problem. That's how you can better learn it, because that's how you're going to see the failure side of it as well, right? So whatever you learn, start implementing that. Otherwise there is no point of it, learning and then forgetting it. Aki wants to say thank you, brother. Thank you so much. Aki said, how to build portfolio, can I make same design to copy others? यार copy तो नहीं कर सकते exactly, but हाँ you can take inspirations from the good design works. Exactly copy करना is not like good thing, but I read a book called Steal Like an Artist, and I always champion this book, and I do recommend this book to all of the people who ever connect with me regarding UI UX, or to my mentees also, when I take classes. So yeah, definitely, brother. Like when it comes to you know uh, like when it comes to copying things, I don't recommend it. However, taking inspiration is not a bad thing. Take inspiration and like tweak it according to your context and put your touch into it. Sir, where we get good internship? Internshala, Well Found, LinkedIn. These three websites are really good to get internship. Hello sir, glad to see you. Thank you, Ma Organics, whoever it is. Thank you so much. How to practice on storytelling part? Samyak, to like get good into storytelling is just to start practicing it by at your home also. Like for example, if you have a case study, keep or start presenting it to your friends, start presenting it to yourself only, right? You can just do a mock drill with your friend, mock drill with your colleagues if you're working somewhere, or if you have joined a course somewhere, you can do it with the fellow designers as well, right? The people who are like fellow in any of the course, so you can do it there as well. Okay, it is like any other skills which can be learned repetitively doing it. And storytelling is just aligning the purpose with the content that you have. And then once you're going to learn about it, there are a lot of methods to tell the story as well. It's just not like this, right? It's a like way more beyond what I said. Sahil sir, what is the meaning of mockups? Mockups मतलब mockup का मतलब वही है यार कि you are actually doing the like dummy project basically. Or the mockup मतलब dummy actually, मतलब dummy project, dummy of something, right? That is mockup. सर बहुत सारे लोग अब यूट्यूब पर यूएक्स डिज़ाइन सिखा रहे हैं, बट हिंदी में नहीं सिखाते. उनका कंटेंट चैट जीपीटी वाला लगता है. आप ऐसा कंटेंट बनाओ जो रियल लाइफ में यूएक्स डिजाइनर्स करते हैं. भाई मेरा कंटेंट वही है. मैं आई एम नॉट ट्राइंग टू डू एनी फेक थिंग ओवर यूट्यूब और एनीवेयर इवन. तो आप मेरा कंटेंट देखो, मैं अपनी भाषा में ही सिखाता हूँ. अलोंग विद दैट उसके अलावा मैं वही प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ जो एक्चुअल प्रोजेक्ट्स में होता है. देखो मैंने प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में काम किया है, तो
जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में काम होता है या जिस तरीके से भी काम होता है, मैं उस तरीके से ही काम करने की कोशिश करता हूँ. I don't do anything fake. I don't do anything which is not happening real, right? So I always try my best to bring my authentic self on any of the platform. No worries. I'm not sure about the other people, but I'll never gonna do it. I'll always gonna present. No, I'm gonna always try to present you the best or the authentic things that I have learned throughout my career. Rampage gaming, can someone just be a specialist in UI and have a UX and other related skills as a secondary? If yes, are there solid chance of getting into the industry? Yeah, देखो basic, like a lot of people are saying that UX always gonna win. Yeah, that I am always agreeing with. But you'll have to understand another thing, which is when it comes to learning UI design or any. हाँ, so can someone, हाँ, तो when it comes to learning UI design, uh, or when it comes to hiring a designer, they always first look for the UI design skills until unless they are looking very specialist guy into research or UX. When someone is hiring for a journalist who can do UI UX both, we always look for UI design skills, visual design skills, because UX cannot be learned by sitting at home or solving 2 3 problems. UX can be learned jumping into the field and solving the real problems. Everybody knows about it. Even the employers who are hiring you, they also know about it, and they are even not expecting you to solve the problem or generate the optimal solution. They are expecting you to understand the process of solving a problem or understand the process how to approach a problem, right? So that's where I say, always go for like visual design skills, always go for interaction design when you are working as a fresher. And then UX always going to help you out to put the reasoning. And I say it a lot of times that visuals or UI design will going to help you out to bring interview to yourself. I mean, bring interview from the companies, and UX will going to help you out to crack that interview. जैसे एस्थेटिक अच्छे होंगे आपके पोर्टफोलियो में, तो आपको इंटरव्यू कॉल आना स्टार्ट हो जाएगा. आपके पास इंटरव्यू कॉल आ गया, उसके बाद उस इंटरव्यू को कन्वर्ट करने के लिए यू नीड अ यूएक्स डिजाइन स्किल्स, जहां पर रीजनिंग बताओगे, डिजाइन डिजाइन डिसीजंस के बारे में बताओगे, आइटरेटिव अप्रोच के बारे में बताओगे, अपने कॉन्टेक्स्ट के बारे में बताओगे, हाउ यू हैव आपने कैसे फीडबैक गेन किया, कैसे आपने यूजर्स के इनसाइट्स को इनकॉर्पोरेट किया, कैसे अपने अजम्पशंस को वैलिडेट किया आपने, राइट? सो ये सब यूएक्स है कि कैसे आपने एक बेटर एक्सपीरियंस शेप करने का ट्राई किया इनटू योर प्रोडक्ट. Is there any scope of product design in 2024? Not 2024, till 2030, I can say, or I can assure you. Think about problem solving, think about product designing, right? See, अगर आपको पेमेंट करना है, we have 15 plus apps to make a payment. यूजर उसके पास जाता है, the people who have the good experience. Just a very simple answer. और सिंपल लाइक अच्छा एक्सपीरियंस कौन डिजाइन करता है? प्रोडक्ट डिजाइनर्स, यूआई यूएक्स डिजाइनर्स, राइट? सो इट्स वेरी सिंपल. ऐसा कभी स्कोप नहीं जाने वाला है भाई, डिजाइन का स्कोप नहीं होगा, बट द वे पीपल आर डिजाइनिंग दैट विल नॉट चेंज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. अभी हम फिग्मा से डिजाइन कर रहे हैं, कल कोई और टूल आ सकता है. पर मुझे इतना पता है, टूल वाली इंडस्ट्री है ना, जो मोनोटोनस टास्क है, वो रिलेवेंट होता चला जाएगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. जो एक्चुअल कोर स्किल्स हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्टोरी टेलिंग, राइट, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, फैसिलिटेशन, तो ये इन स्किल्स की वैल्यू ज्यादा होगी. कम्युनिकेशन, इन सभी स्किल्स की वैल्यू ज्यादा होने वाली है. टेक्निकल स्किल्स वाला जो काम है, वो कहीं ना कहीं मोनोटोनस होता चला जाएगा और उससे कहीं ना कहीं एआई रिप्लेस करता चला जाएगा. बट जो एक्चुअल वर्क है, स्टोरी टेलिंग, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसे कभी रिप्लेस नहीं कर सकते, बिकॉज विच इज वेरी यूनिक इन एवरी कॉन्टेक्स्ट. तो एआई हर किसी कॉन्टेक्ट को समझ के एक बेटर सॉल्यूशन जनरेट नहीं कर सकता. इंसान को इंसान ही समझ सकता है भाई, बेटर बेटर तो डेटा को बेहतर समझ सकता है एआई. Sir, please start your own cohort. I would love to learn from yourself. Anil, or all of the guys, I'll be soon starting my own cohort. We'll see. No worries. I'm gonna start my live cohort. My organic farm. Hello sir, ये Figma ऐप कहाँ से डाउनलोड करें? गूगल पे जाएं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं. सर, कंपनी फ्रेशर में क्या देखती हैं जब वो इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करता है? कंपनीज देखती हैं कि इसने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं या नहीं, इसने रियल काम किया है या नहीं. जब इंटर्नशिप के लिए आप जाते हैं, वो आपकी पोर्टफोलियो में देखती हैं, प्रोसेस को कितने अच्छे तरीके से जानते हो, आपको सॉल्यूशन ढूंढना कितने अच्छे तरीके से आता है. क्योंकि कंपनीज को भी पता है जो सॉल्यूशन आपने ढूंढा है, दैट माइट नॉट बी अ परफेक्ट सॉल्यूशन, वो एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन
नहीं है, राइट? तो अ, वो एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं होगा। तो कंपनी यही देखेगी कि आपको सॉल्यूशन ढूंढना कितने अच्छे तरीके से आता है, आपका डिजाइन प्रोसेस कितना रोबस्ट है, आपने वही सेम टेम्पलेट तो यूज नहीं किया डिजाइन थिंकिंग वाला फ्रॉम द इंटरनेट, राइट? और किस तरीके से अपनी स्टोरी टेलिंग की है इन द केस स्टडी एज वेल। I saw a post about saturation in the field and I'm a little bit scared about that. भाई ये केवल डिजाइन फील्ड का ही नहीं है, यू सी एनी फील्ड, सैचुरेशन पॉइंट तो आएगा ही यार। इफ एवरीबडी इज गेटिंग इनटू द फील्ड एट ए टाइम, राइट, तो सैचुरेशन पॉइंट आएगा। बट ऐसा नहीं है जैसे 2008 में लोग बोलते थे कि आईटी इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, राइट? फिर कुछ नया आ गया, एंड्रॉयड आ गया, राइट? अभी कुछ दिन पहले लोग बोल रहे थे कि भाई कोडर्स की जॉब चली जाएगी, ये आ रहा है, कुछ नहीं हुआ। कुछ लोगों ने बोला डिजाइनर्स की जॉब चली जाएगी, कॉपी राइटर्स की जॉब चली जाएगी, नहीं जाएगी यार। वो उन लोगों की लोग जाती है जो टूल डिपेंडेंट लोग हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्राफिक डिजाइन में उन लोगों की जॉब अभी गई है बिकॉज ऑफ एआई। द पीपल हु आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन लाइक फोटोशॉप, बहुत ही मोनोटोनस वो जॉब करते हैं। अगर आप अपने आप को अपस्किल नहीं करोगे, फ्यूचर के साथ अलाइन नहीं करोगे, तो जॉब जाने के चांसेस ज्यादा हैं। आई कैन 100% एग्री। बट इफ यू आर अपस्किलिंग योर सेल्फ एंड देन यू आर लर्निंग न्यू थिंग्स, तो कोई चैलेंज नहीं आएगा आपको यार। और दूसरा, जो हार्ड स्किल्स होती हैं, ये सॉफ्ट आई मीन टेक स्किल्स होती हैं, वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम रिलेवेंट होती चली जाती है। जैसे पहले जो सॉफ्टवेयर बनते थे इन 2000 और बिफोर 2000, सी शार्प, सी प्लस प्लस, जावा, उसमें सॉफ्टवेयर बनते थे, राइट? अभी न्यू फ्रेमवर्क्स आ गए हैं, रिएक्ट, एंगुलर, नोट जेएस, व्यू जेएस, राइट? जावा स्क्रिप्ट में काम ज्यादा होता है आजकल, राइट? रिएक्ट नेटिव, फ्लटर, लॉट ऑफ लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ गई है। इसी तरीके से पहले डिजाइन लोग करते थे फोटोशॉप में, इलस्ट्रेटर में, ये फिग्मा आ गया, कैनवा आ चुका है, राइट? फ्रेमर आ चुका है, डोरा आ चुका है, यूआई जार्ड आ चुका है, राइट? तो इस तरीके से सॉफ्टवेयर आते रहेंगे और आप अपने आप को कंटिन्यूसली अपस्किल करते रहोगे, तो डिमांड ऑलवेज बनी रहेगी आपकी। सर फिग्मा में अगर किसी पिक को डिलीट करें तो कैसे करेंगे, क्योंकि सर कोई बता ही नहीं। पिक मतलब पिक्चर, किसी पिक्चर को डिलीट करना है तो उस पर क्लिक करके डिलीट वाला बटन दबा दो यार। ये तो कोई इतना लाइक लॉजिकल आंसर आई डोंट फील, या कुछ और आज पूछ रहे हो आप? हाँ, पिक्चर पे तो क्लिक करो एंड देन प्रेस द डिलीट बटन। देखो कोई भी जो स्किल है ना फ्यूचर प्रूफ नहीं है, तो इसलिए एआई से आपको डरने की जरूरत नहीं है किसी को भी। कोई भी स्किल फ्यूचर प्रूफ नहीं है। और दूसरी बात, डिजाइनर्स की डिमांड इसलिए खत्म नहीं हो सकती, द वे पीपल थिंक ऑलवेज गोना चेंज। Yeah, like, yes, Anil, definitely. I really appreciate your really appreciate it. But however, मैं एक अपना कोहोर्ट स्टार्ट करने वाला हूँ, इवन आई एम थिंकिंग ऑफ इट। आप मुझसे इंस्टाग्राम वगैरह पे कनेक्ट कर सकते हो और लाइक मैसेज कर सकते हो, देन आई विल रिस्पॉन्ड यू लाइक हाउ सून यू कैन जॉइन अस। लॉर्ड हनुमान सुन भाई, हिंदी। ओके, आई एम सॉरी ब्रदर, हुएवर यू आर, आई मीन इन हिंदी इटसेल्फ। हिंदी में बात करते हैं, बताइए। Any other question, guys? Any other question you want to know, guys? Any other question you guys want to know? Like anything you would like to talk about, or anything you feel that we should talk? Thank you so much. Thank you so much. Guys, as we are ending this year, Happy New Year to all of you who have joined the meeting. And I really appreciate your time that you guys gave. Where is your brother?
कोडिंग का सीन क्या है सर यूआई यूएक्स में? यार यूआई यूएक्स में कोडिंग तो नहीं चाहिए, बट फिजिबिलिटी का आपको पता होना चाहिए, हाउ फिजिबल योर डिजाइन इज। क्योंकि सी, when it's come to designing, it's just always not about designing fancy pictures. It's about how well your design can be translated into a code. So जो भी आप डिजाइन बनाते हो वो कोड में भी लाइक ट्रांसलेट होना चाहिए, ताकि आप डेवलपर्स के साथ बेटर तरीके से सिंक कर सकें। Anil, happy new year sir, god bless you, you are delivering valuable content to us. Thank you so much Anil sir, I really appreciate it sir। जिनसे पहले एक बार, अगर यार यूएक्स में आपको करियर बनाना है, वेरी सिंपल अगेन, पहले फंडामेंटल स्किल सीखो। देखो, अगर आप डिजाइनिंग में किसी भी डिजाइनिंग फील्ड में करियर बनाना चाहते हो, तो पहले एक डिजाइन टूल आप सीख लो, जिस बहुत ही सिंपल टूल है, वी कॉल इट फिग्मा। फिग्मा सीख लो, उसके बाद फिग्मा में कुछ मॉकअप प्रोजेक्ट्स करो। यानी फॉर एग्जांपल, मेरा तो एक तरीका है और दैट तरीका है डिलीवर टू माय स्टूडेंट्स एज वेल। सिंपल है, जो एग्जिस्टिंग वेबसाइट्स हैं, जो एग्जिस्टिंग पॉपुलर मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, उन्हें डिजाइन करना स्टार्ट कर दो। स्क्रैच से उन्हें डिजाइन करो। जब आपने फिग्मा में मास्टरी गेन कर ली विद इन अ वीक और टू, उसके बाद जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसमें कमियां देखो आप। कमियां देखने के लिए थोड़ा नॉलेज आपको गेन करना पड़ेगा अबाउट दी लॉट ऑफ फ्रेमवर्क। जैसे गाइडलाइंस होती हैं कुछ, WCAG गाइडलाइंस हैं, वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस, इनके थ्रू आप अंडरस्टैंड कर सकते हो क्या क्या कमियां हो सकती है। यूजेबिलिटी गाइडलाइन है, राइट, पैट्रिक के द्वारा, लाइक पैट्रिक मोरविले, आई मीन पीटर मोरविले करके एक बंदा है जिसने एक हनी कॉम मॉडल बनाया, 7 गाइडलाइंस बनाया फॉर यूजेबिलिटी, राइट। तो उसके मॉडल को आप स्टडी कर सकते हो। उसके अलावा ह्यूरिस्टिक वैल्यूएशन की 10 गाइडलाइंस बनाई है जेकब नेल्सन ने, उन्हें आप स्टडी कर सकते हो। और इन सभी फ्रेमवर्क्स को आपको इनकॉर्पोरेट करना है या फिर लगाना है किसी एक प्रोडक्ट में। देखो उसमें जो कमियां हैं, उसे कमियों को देखो, और कमियों को देखकर फिर उसे रीडिजाइन करो। आप क्या सॉल्यूशन रिकमेंड करोगे? दैट्स व्हेन यू गोना स्टार्ट बिल्डिंग प्रोडक्ट थिंकिंग एंड प्रोडक्ट सेंस। ऑलराइट, तो इस तरीके से काम किया जाता है। और फिर उसके बाद आप कंटिन्यूअस लाइक 2-3 प्रोजेक्ट्स को सॉल्व करो। उसके बाद आप कलर थ्योरी के बारे में सीखो, कलर किस तरीके से काम करते हैं, कलर हार्मनी के बारे में सीखो, टाइपोग्राफी के बारे में आप सीखो, ठीक है। और उसके बाद एक टॉपिक है विच इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी क्रूशियल टू लर्न, राइट, विच इज कॉल्ड डिजाइन सिस्टम। डिजाइन सिस्टम का आपको पता होना चाहिए किस तरीके से डिजाइन सिस्टम फंक्शन करता है और किस तरीके से आप यूटिलाइज कर सकते हैं व्हेन यू आर डिजाइनिंग। एक आपके पास स्मार्ट एज रहेगा व्हेन यू आर डिजाइनिंग विद द डिजाइन सिस्टम, बिकॉज यू ऑलरेडी नो हाउ टू थिंक इन ए सिस्टम। आपके पास कंस्ट्रेंट के साथ काम करना आ जाएगा। जैसे कंपनीज में हर एक कंपनी कंस्ट्रेंट के साथ काम करती है, किसी डिजाइन सिस्टम को अडॉप्ट करती है, अडेप्ट करती है, एंड दे वर्क विद द डिजाइन सिस्टम। तो सिस्टम के साथ सोचना इज वेरी इंपॉर्टेंट, किसी सिस्टम में रहकर सोचना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आप सीखना स्टार्ट कर सकते हो और समझ सकते हो बेसिकली, ठीक है। और जब आपने प्रॉपरली ये सब गाइडलाइंस आपने समझ लिया, राइट, आपको सिस्टम के साथ सोचना आ गया। अब टाइम है आपको इन स्किल्स को और एनहांस करने का, जहां पर आपको डिजाइन प्रोसेस के बारे में सीखना पड़ेगा। देखो, प्रोसेस के बिना भी आप डिजाइन कर सकते हो, बट प्रोसेस से आपको एक स्ट्रक्चर मिलता है जो कि आपको गाइड करता है व्हाट नेक्स्ट स्टेप यू कैन टेक, राइट। तो मल्टीपल प्रोसेस है डिजाइन करने के, डिजाइन स्प्रिंट है, डिजाइन थिंकिंग विच इज वेरी पॉपुलर, डबल डायमंड प्रोसेस है, 6 आई थिंक वी कॉल इट लाइक नॉट इमेजिन एक्सपी के द्वारा डिजाइन किया गया प्रोसेस है, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट व्हाट वी कॉल इट, बट हाँ, द मल्टीपल प्रोसेस है, उन्हें स्टडी करो। एंड देन प्रोसेस के बिहाफ पर लाइक स्टेप बाय स्टेप या फिर नॉन लीनियर प्रोसेस होते हैं, एक आइडियल प्रोसेस फॉलो करके एक केस स्टडी बनाओ। उस केस स्टडी से आपको प्रोसेस के बारे में जानकारी मिल जाएगी, ये प्रोसेस कैसे फंक्शन करता है। तो उसके बाद आप नॉन लीनियर मतलब एज पर दी प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट एक केस स्टडी बनाना स्टार्ट करो, राइट। अदर अदर जो डिजाइनर्स हैं उन्हें अपना काम सेंड करते रहो,
उनसे अपना काम रिव्यू कराते रहो। डिजाइनर्स की जो कम्युनिटी है उसमें आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। डिजाइनर्स की जो मल्टीपल कम्युनिटीज है इंटरनेट पर, अभी हमने भी एक कम्युनिटी बनाई थी ऑन व्हाट्सएप, बट देयर वी आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ दैट आप प्रॉपरली कोई लाइक केस स्टडी बना सकते हो। आई मीन लाइक नॉट केस स्टडी, आप लाइक कुछ ऐसी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो जहां पर आपको फेलो डिजाइनर्स मिल जाए। आप इंटरनेट पे सर्च कर लो कौन कौन सी वो कम्युनिटीज हैं, मल्टीपल कम्युनिटी को ज्वाइन करो, जो वहां पर लोग हैं उनके साथ इंटरेक्ट करो, अपना डिजाइन उन्हें रिव्यू कराओ। लिंक्डइन पे जाकर जो डिजाइनर्स ऑलरेडी इंडस्ट्री में है उनसे मेंटरशिप लो, उनसे अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराओ। तो इस तरीके से आप इंप्रूव कर सकते हो। हैप्पी न्यू ईयर सर, वेरी गुड। एंड सर फ्रंट एंड डेवलपर को फिग्मा सीखना चाहिए या नहीं? देखो यार अर्शदीप, आई डोंट नो अबाउट इट। इफ यू आर ए फ्रंट एंड डेवलपर यू नीड दैट, यू नीड टू लर्न फिग्मा। सीख लो यार, 1 घंटे का मैंने वीडियो बनाया अपने यूट्यूब चैनल पर, वहां पर जाओ और वहां से जाके फिग्मा सीख लो। वेरी सिंपल। ठीक है, नॉट एन इशू एट ऑल, वेरी सिंपल। हमने एक पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है, उससे आपका काम हो जाएगा। जितना फिग्मा आपको सीखना है उतना फिग्मा मैंने उस वीडियो में सिखाया है। बहुत एडवांस लेवल तो नहीं है, बट बेसिक टू लाइक जीरो टू हीरो तो है वो। आपको एक एज देगा ओवर अदर डेवलपर्स जिन्हें फिग्मा नहीं आता। ठीक है, और व्हेन यू आर वर्किंग एज ए फ्रीलांसर एज ए फ्रंट एंड डेवलपर, तो कुछ कंपनीज आल्सो एक्सपेक्ट यू टू क्रिएट द डिजाइन एज वेल। वो कुछ जो क्लाइंट्स है वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको डिजाइन भी आना चाहिए, राइट? तो आपके पास वहां पर एक स्मार्ट एज रहेगा। ठीक है, तो मैं तो कहूंगा फिग्मा सीख लो, नॉट एन इशू एट ऑल। एनीथिंग एल्स गाइस, और if you want we can wrap it up. I'm gonna wait for 3 more minutes. If you have any question between that, we're gonna take that question, as we're gonna quickly wrap it up. यार आई वाज सपोज टू स्टार्ट दिस स्ट्रीमिंग एट 7 p.m. ओनली, बट जो स्ट्रीमिंग मैंने शेड्यूल करी थी, आई थॉट कि वो डायरेक्टली स्ट्रीम हो जाता है। दैट्स व्हाई इट टुक मी सम लाइक 10-15 मिनट्स टू स्टार्ट इट आउट। बट अभी हम सही रिस्पॉन्स देख रहे हैं यहाँ पर, तो आई गोना थिंकिंग ऑफ लाइक कीपिंग द स्ट्रीमिंग लाइक एवरी डे और एवरी ऑल्टरनेटिव डे। यूएक्स डिजाइनर बनने के लिए इट्स नॉट नेसेसरी, बट स्टिल इफ यू नो फिग्मा, यूएक्स डिजाइनर की बात कर रहा हूँ मैं, यूआई यूएक्स डिजाइनर की बात नहीं कर रहा हूँ। There are a lot of designers I have seen who are doing really good into their career, without knowing Figma also they are doing really good. मतलब फिग्मा तो आता है, बट इतना फिग्मा नहीं आता कि दे आर यूआई डिजाइनर, दे आर प्रॉपर यूएक्स। इवन मैंने भी एक इंटरव्यू डाला हुआ है, द गर्ल हु इज फ्रॉम लॉलीपॉप, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल हर नेम, मैंने उसे मेंटरशिप दी थी। तो एक इंटरव्यू, आई मीन नॉट इंटरव्यू, मैंने एक मेंटरशिप सेशन का वीडियो अपलोड किया हुआ है। शी इज फ्रॉम लॉलीपॉप, शी वाज वर्किंग एज ए यूएक्स डिजाइनर एंड शी डजंट नो हाउ टू यूज फिग्मा। मतलब फिग्मा थोड़ा बहुत तो आता है, बट एट नॉट एट दैट लेवल यहाँ पर यूआई हम क्रिएट कर सके। तो बिना यूआई क्रिएट करे भी यू कैन बिकम अ यूआई यूएक्स डिजाइनर। Anything else guys? I think anything else guys, if you want to discuss, else we're gonna wrap it up. Thank you so much guys, it was happy new year to everyone once again guys. It was amazing to having chat with you, and hopefully I tried my best to add value to your life guys. Hopefully I might have no answer to your questions, and thank you so much for joining me on this live. I really appreciate your time, support that you're showing on this channel. Thank you so much guys, I really appreciate it. Thank you so much. Bye bye guys.